वो पता है वो वेजिटेरियन होता है बिकॉज उनके फ्लैट हो जाता है तो उनका पैर नीचे वो होता है Okay, let's get back to business. All right. So in this class, we'll discuss about the biodiversity conservation. What are the different kinds of biodiversity hotspots, and threat to biodiversity, and what are the things happening. A lot of questions are asked in UPSC from this part, so I'll be showing you those questions as well. So we'll start with biodiversity, and before getting in there, so we'll just see the meaning and definition of biodiversity. See, biodiversity basically is the shortened form of biological diversity. Okay, so biological diversity, in the sense, it is the disparity, okay, among the species, okay, or within the species and in different ecosystems. Okay, so we see diversity within the species. Let's say for example, हम सब human beings, we are all homo sapiens, but we are different from each other. We are different at the genetic level. हमारा जो genetic makeup है वो एक दूसरे से अलग है. Even we don't have a same genetic makeup as our parents. एक पेरेंट्स है उनका ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप भी अलग होता है. ओके, सो द रीजन बीइंग देयर इज अ प्रोसेस इन मियोसिस 1 में, इन द स्टेज ऑफ प्रोफेस, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज खयाजमेटा. उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो जेनेटिकल मेकअप है डीएनए में, क्रोमोसोम्स में, वो शफल होता है. ओके, दे गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, इसलिए वो वेरिएशन आता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन द स्पीशीज. ओके, इसको इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में भी डिफरेंस होता है. ओके, इसको इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. और जो ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम से दूसरा इकोसिस्टम का ऑर्गेनिज्म से डाइवर्स होते हैं, इकोसिस्टम लेवल डाइवर्सिटी बोलते हैं. सो दैट डिफरेंस और डिस्पैरिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, सो जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटालिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. विल स्टडी देयर एट 3 levels. ओके, सो हियर यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो टर्म कॉइन किया है वो एक ही साइंटिस्ट होता है. व्हाई आई हैव गिवन 3 साइंटिस्ट्स? द रीजन बीइंग, कुछ बुक्स में it is claimed that biodiversity was claimed by the word biodiversity was coined by W.G. Rosen in 1985. कुछ बुक्स में और कुछ सोर्सेस में it is given as Raymond Dasman, and कुछ बुक्स में it is given as Thomas Lovejoy. तीनों हैं, और surprisingly these sources are authentic. Okay, so if at all the question comes कि who coined the term biodiversity,
और तीनों को ऑप्शन दिया है. सो द फर्स्ट चॉइस शुड बी WG रॉसन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वो कॉइन बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन किया था. उससे पहले 1960s में रेमंड डैसमन ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया. He has given the concept of biodiversity, and even in 1980 थॉमस लॉजॉय में भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, but they are not the ones who coined. So the first option should be WG Rosen. By chance अगर ऑप्शन में रोसन नहीं है, दूसरा कोई भी है, तो then go for it. Okay, choose डैसमन और लॉजॉय. ऐसा बहुत कम चांसेस है कि मतलब तीनों का नाम दिए, दोनों का नाम दे दे. सो दे विल गिव ऑप्शन. सो इफ रोसन इज नॉट देयर, देन दीज टू आल्सो होल्ड्स गुड. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट. ओके, सो नाउ ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. This was a state prelims question in 2017. Okay. Who says A? B? C? D? I was just checking your observational skills. How observant you are while watching the slides. है ना? So, it is 22nd May. That is called as World Biodiversity. This is actually a question like state prelims में पूछा गया था. But anyways, see levels of biodiversity. Biodiversity में तीन components है. As I said, there is genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. तो देख रहे हो एक ही तरह का कैप्सिकम आता है अलग अलग कलर से. They are different. Humans are different. So अलग अलग individuals of the same species will have different DNA makeup. That is genetic diversity. और अलग अलग species अलग अलग दिखते हैं. They differ in their morphology, they differ in their genetics, they differ in their chromosome number. बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग है. That is called as species diversity. And एक say for example aquatic ecosystem और terrestrial ecosystem. इन दोनों का organisms में there is a huge difference. The organisms living in forest and organisms living in grasslands are different. Okay, so उसको हम लोग ecosystem diversity बोलते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट्स है और एक और तरीका है बायोडाइवर्सिटी स्टडी करने का, which is alpha diversity, beta diversity and गामा डाइवर्सिटी. सो ये तीनों अलग अलग तरीके हैं डाइवर्सिटी स्टडी करने का. सी अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी. एक कम्युनिटी के अंदर, यू नो व्हाट इज कम्युनिटी, राइट? कम्युनिटी इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस. उस कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी है अमंग द पॉपुलेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्फा डाइवर्सिटी. ओके, and when you see the diversity in between two communities, okay, that is called as beta diversity, right? So देखो एक ही community के अंदर 5 तरह का variations है, that is alpha diversity, and in between them there are 15 different kinds of diversities. एक अलग अलग community के बीच में compare करेंगे, so that is beta diversity. Okay. Okay. And if you take the diversity across the entire ecosystems, ये तीन तरह का diversity. Okay, so that is beta diversity, and gamma diversity is among the population, two communities. Okay, so gamma diversity is studied among an entire ecosystem. Okay, there are totally 15 diverse species in the entire ecosystem. That is called gamma diversity. And अलग अलग कम्युनिटी के बीच में स्टडी किया तो that is beta diversity. Okay, so alpha, beta and gamma. Within the community, alpha. In between the community, beta. In the entire ecosystem, that is gamma. Okay, तीन तरह का diversity.
So that is what is the diversity. So ये एक स्टेट प्रीलिम्स का क्वेश्चन था. The variety and variability of life among plants, animals and microorganisms is called as, who says A, B, C, D. So alpha diversity is a component of biodiversity. Okay, when you say variety among the life, variety of life among plants, animals and microorganisms, that is biodiversity. Okay, see, when you say biodiversity, it's basically we are talking about the species diversity. Okay, so this is just one practice question. I was just curious, do you know the order in which the diversity is there? Okay, see, genetic diversity is very difficult to study. एक पॉपुलेशन पकड़ के उसके जितने भी इंडिविजुअल्स है सबका डीएनए स्टडी करना पड़ेगा, उनका जीनोम सीक्वेंस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि उनका जेनेटिक्स में क्या क्या डिफरेंस है. इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट लेवल ऑफ स्टडीइंग द डिफरेंस. एंड इकोसिस्टम भी बहुत ज्यादा बड़ा, उसमें भी मतलब बहुत ही वेग डिफरेंसेस होता है. कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स भी होता है जो दोनों इकोसिस्टम में हो. ओके, so it is also difficult to study the ecosystem diversity. So the best level of studying ecosystem diversity is species diversity, diversity among the species. So by default, when you say biodiversity, we consider species diversity. Okay, हम लोग उसी को मान के चलते हैं कि when you say biodiversity, हम लोग species diversity के बारे में बात कर रहे हैं. So it is, sorry, 2, 3, 4, 1. Arrange the following in the descending order of their biodiversity. कितना वेरिएशन है ओके स्पीशीज डाइवर्सिटी में. सो फर्स्ट ऑप्शन है 4 एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड वायरस. देन इट इज इंसेक्ट्स, वायरस, एनिमल्स एंड plants. Okay, then virus, plants, insects and animals. And D, insects, plants, animals and virus. Who says A? को लगता है सबसे ज्यादा एनिमल्स है, फिर इंसेक्ट्स है. ओके, B, C, सबसे ज्यादा वायरस है. ओके, बहुत प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस. डी. Okay, so D is the right answer. Okay, so we have highest number of species in insects. We have around 7,40,000 species of insects, and we have around 2,90,000 species of plants, and animals 2,80,000 species. Okay, and only 1,100 species of virus. सिर्फ 1,100 including like excluding corona 1,101 corona virus add कर दो. Okay, so there are these many species. Okay, so first order is this one. This is 1, then it is 2, this is 3, and this is 4. See, it is believed that there are around 13 million species of plants, animals, microorganisms around the globe, जिसमें से हम लोग only 1.75 million को ही आइडेंटिफाई करके नाम दिए. Okay, we are not able to still explore lot of diversity which is present in the thing. Okay, so this is the broad breakup of biodiversity, right? So when you say the biodiversity, okay, it is mostly expressed in terms of species diversity. Okay,
सो हाईएस्ट नंबर इज इंसेक्ट्स, देखो 7,40,000 इंसेक्ट्स है। उसके बाद अराउंड नियर टू 3 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है। देन देर इज 2,80,000 एनिमल्स, ऑल द किंगडम एनिमल्स, एनिमलिया। उसके बाद जो है वी हैव फंगाई, फंगाई इज अराउंड 66,000. We have 66,000 species of fungi. Okay. So what is Armillaria ostoi? सुना, नाम सुना? नाम नहीं सुना? This is the largest living organism on the planet, and it's not blue whale. Okay, this is present in Oregon forest in California, North America. So वहां पे it has spread under the ground to around 2,300 acres of land. वो एक species, one organism. And this is the largest living organism on the planet at present. Okay. So likewise we have so many species of fungus. Then we have around 30,000 species of protozoa. Okay. So all these protozoans include amoeba or flagella. Okay. So several members of kingdom protista, जो disease causing organism है. Okay. So all these belong to kingdom protista. Protozoa is one of them. Protozoa is the one which causes malaria. Malaria is caused by protozoa. Ucheraria, okay, एक organism है filaria. So it causes a disease called as elephantiasis. Okay. So that's I think that belongs to animal. Okay, but protozoa is kingdom protista, 30,000 है. फिर we have bacteria, around 4,600 species of bacteria and other forms. Okay. So and we have only around 1,100 species of virus. So this is the broad breakup of the biodiversity. Okay. Yes, and I am sorry, it's not a thing. It is one of the animal. It is one of the phylum under kingdom. Elephantiasis में क्या है, पूरा जो lower part of the it becomes like elephant legs. Okay. Encephalitis is, I think it's a disease which is to do with the internal organs. Okay, so it is definitely not elephantiasis. Okay, so that's no, not protozoa. That is caused by Ucheraria. Ucheraria doesn't belong to kingdom protista. It belongs to kingdom animalia. Okay, I got confused with it. Anyways. Yeah. So why do you have to study biodiversity? क्या है इसमें? Okay, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है कि what is biodiversity and what is the value of biodiversity to human beings in the present day life? Okay, कि क्यों biodiversity चाहिए? What is the use of it? So हम लोग एक एक करके पूछते हैं. सबसे पहले it provides food, fuel and fiber. Okay. Because we have biodiversity, हमको इतना सारा खाने का varieties मिल रहा है. We have fruits, we have vegetables, we have different kinds of cereals, rice, wheat, oil seeds. All these are because we have diversity. सोचो diversity नहीं होता तो एक ही टाइप का प्लांट मिलता, तो सुबह शाम रात को you have to eat only that. Okay. So it gives lot of varieties of food जिससे हमारा अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है. ओके, ह्यूमंस कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वेराइटीज
Okay, and because of this variation, we have various kinds of fuel, fiber. Fuel क्या है? Firewood, जो लकड़ी जलाते हैं ना गांव में, fuel wood. So that is because we have different kinds of plants which not only provides us food but also helpful in fuel. देखो अभी environment से और forest से जो भी useful आए ना, uses, okay, उससे remember these 5 F's. Okay, food, feed, fodder, fuel, fiber. ये 5 चीजें हमको कभी भी whenever you are talking about benefits from environment, benefit from forest, तो ये 5 हमेशा लिख सकते by default. फूड मतलब वही है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह. फीड क्या है? ग्रासेस, ओके, अल्फाल्फा, जो डायरेक्टली एनिमल्स को खिला सकते हैं. इट्स कॉल्ड फीड. एंड व्हेन यू प्रोसेस दैट फीड एंड गिव इट फॉडर, नीम केक, ओके, और जो भी मतलब बनाते हैं ना अलग अलग चीज मिला के जो खिलाते हैं, इट्स फॉडर. देन यू हैव दिस फ्यूल, लकड़ी, ओके, वुड, फायरवुड, एंड फाइबर, कॉटन, जूट, जो इसको यूज कर सकते हैं. दैट्स वन थिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल, बिकॉज देयर इज बायोडाइवर्सिटी हमको अलग अलग तरह का वुड मिलता है. Okay, we get, MP में तो सागवान फेमस है. Okay, we make lot of furnitures, wood, these are all made up of wood. Okay, so there are some plants which yield softwood, hardwood. Okay, पुष्पा में भी देखा है हमने. Okay, some wood is used for making guitars. So अलग अलग uses होता है. Okay, some woods are used for building materials. Okay, so because there are some trees which has a very big canopy, उसके अंडर शेल्टर मिलता है. बहुत सारे लोग शेड लेते हैं उससे. That is because we have diversity. अलग अलग तरह का है plants, so we get this shelter and building material. Several plants are involved in purification of air. ऐसा बहुत सारे plants है जो एयर प्यूरिफाई करता है बाय अब्सॉर्बिंग द पोल्यूटेंट्स. ओके, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट जो एब्सॉर्ब होता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ओके, प्लांट्स विल अंडरगो फोटोसिंथेसिस एंड इन दिस प्रोसेस दे एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, reduces the carbon dioxide mainly which is released by human activities. okay, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो ह्यूमन एक्टिविटीज से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, स्टबल बर्निंग एंड अदर व्हीकुलर एक्टिविटीज सो होता है. सो दैट थिंग, एंड नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर मेनी ट्रीज विच ऑल्सो फिल्टर्स द पार्टिकुलेट मैटर अपने कैनोपी से. Okay, they act as a filtrate. They help in cleaning the air, and there are some plants which have ability to absorb the pollutants from the water. Okay, जैसे कि कुछ this process is called as bioremediation. Okay, and it's not only plants, even microorganisms are used in cleaning the or finding the solution for the pollution problems of environment. Okay, कुछ bacteria, कुछ fungus. Okay, even some of the animals like oyster is also used in purification of water, क्योंकि वो filter feeding करता है. Okay, 2022 में एक क्वेश्चन था, which of the following organisms does the
फिल्टर फीडिंग. सो फिल्टर फीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें पोल्यूटेड वाटर को अंदर लेके वो जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स है, हमारे लिए पोल्यूटेंट्स है, उसको रिटेन करके प्योर वाटर को बाहर छोड़ देते. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टर फीडिंग. ऑर्गेनिज्म करता है. सो दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव evolved different methods of livelihood, जिसकी वजह से जिसको हम लोग एनवायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर क्लीनिंग एयर, क्लीनिंग वाटर. देयर वाज वन क्वेश्चन इन 2015 14 या 15 में कि रिसेंटली ऑयल जैपर एंड ऑयल वोरस वर सीन इन न्यूज. क्या है? हाँ, so these are the genetically modified bacteria जो टेरी ने बनाया था. टेरी, there is an organization called as the Energy Research Institute. Earlier it was Tata Energy Research Institute. उसके बाद नाम बदल के इसको the Energy Research Institute बना दिए. उन्होंने एक genetically modified bacteria को create by altering the genome. जो बैक्टीरियास अगर सॉइल में ऐड किए तो जितने भी ऑयल पोल्यूशन है उस पूरा का पूरा ऑयल को खा लेते. दे वुड हैव कंप्लीटली वाइप्ड आउट द ऑयल ट्रेसेस इन द सॉइल, क्लीनिंग अप द ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल होता है ना, ऑयल स्पिल बिग पोल्यूशन. उस ऑयल स्पिल को खाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए देयर वर सम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको ऑलिवोरस और ऑयल. ओके, सो वो क्वेश्चन भी है. आई मेक यू आंसर दैट क्वेश्चन व्हेन वी आर डीलिंग विथ पोल्यूशन. ओके, सो वाटर पोल्यूशन में हम लोग देखेंगे उसको. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. सो प्यूरिफिकेशन ऑफ, व्हाट इज इट? नो, दैट इज अ प्योर फॉर्म. बट दिस ऑलिवोरस वगैरह है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ओके, वो क्वेश्चन मैंने डाला हूं. आई हैव पुट इट इन द स्लाइड्स, सो डू दैट. Olivorus and oligotide, something like that. There were two bacteria. Okay, I am not able to remember that question. वो question था 2014 में. So I just remembered while I was speaking about bioremediation. Okay, anyways, detoxification and decomposition of waste. See, because we have, okay, it's not going. Because we have diversity, because we have biodiversity, अलग-अलग microorganisms possible है. Because we have bacteria, so many kind of bacteria, many different bacteria are involved in detoxification and decomposition of waste. Okay, so different bacteria are involved, and that is possible because of the diversity among them. Okay, कुछ bacteria nitrogen fixation कर रहा है, कुछ bacteria अमोनिफिकेशन कर रहा है, नाइट्रिफिकेशन कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है. डिफरेंट प्रोसेस ऑफ decomposition of waste or detoxification. So because we are having so many kinds of scavengers, termites है, okay, so vultures है, so they all reduce the dead organic matter, decompose them. Yeah, that is because of biodiversity. Stabilization and modernization of Earth's climate. Okay. So the atmosphere is moderated by the presence of several plants. आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जहां फॉरेस्ट है वहां का माइक्रो क्लाइमेट अलग होता है. There will be much more cooler. Okay, there will be temperature will be different from the plains. Okay, so they will moderate the Earth's climate. They help in stabilization. बहुत सारा जो trees है, they will act as a sponge for water pollution. They help to arrest the sediments. Okay, so they stabilize the stream erosion on the banks.
So they does a lot of stabilization of the earth's climate as well as soil. Okay, so they're important. Moderation of floods, droughts, temperature extremes, and forces of wind. So we grow several trees across the farm, okay, which is called as shelter belts and wind breaks. So wind breaks or shelter belts, बुलाते हैं उसको. So these are grown across the fields ताकि वो विंड को डिफ्लेक्ट करे या विंड के इंटेंसिटी को कम करे, उसका स्पीड को कम करे, जिससे लिए इस चीज को हम लोग विंड फोर्सेस को कम करने के लिए करते हैं. टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के लिए हम लोग वी ग्रो लॉट ऑफ ट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. ओके, फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एज आई सेड इट एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज. ओके, सो दे रिड्यूस द intensity of the flood when they passes through the series of plants and trees. Okay, they act as a sponge by absorption of water. Okay, droughts, shelter belts. हाँ, वो क्या होता है कि ये अगर आपका फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में ट्रीज को ग्रो करते हैं. Okay, so the tallest trees are kept in the middle and small trees on the sides. जैसे विंड आएगा it will rise and before coming back जितने भी हाइट है ना ये टॉल ट्री का उसका 10x टाइम्स एरिया को छोड़ के बाद में नीचे आता है विंड. ओके, दिस वे वी कैन get protected from winds. Okay, so that's the thing. जनरेशन एंड रियल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. मैंने देखा कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मेनी ऑर्गेनिजम्स प्ले अ मेजर रोल इंक्लूडिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, कन्वर्टर्स, phosphorus mobilizers. Okay, so nitrogen converters from ammonia to nitrates and other things. So all these will help in nutrient cycling. Some of the organisms fix the atmospheric nitrogen. So they help in generation of the soil and also renewal of the soil fertility, including nutrient cycling. So there are so many process which happens. Okay, when you are forming the soil formation. Soil बनने से पहले it would have been rock. Soil क्या है? Soil are small broken fragments of rocks. That's it. Rocks जो है वो disintegrate होके decompose होके they would have become soil. और ये होता है through various agents, biotic agents and abiotic agents. Okay, so some of the organisms are also capable of doing weathering. Can I name an exact example? ग्रो करके उसको डिकम्पोज कौन सा करता है? प्लांट्स नहीं, प्लांट्स भी करता है. प्लांट्स ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन वेदरिंग थ्रू देयर रूट. वो एक बायोलॉजिकल एजेंट्स है. रूट से वो ब्रेक डाउन करता है बड़े बड़े रॉक फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में. उसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है पायनियर्स ऑफ प्लांट सक्सेशन. यही है ना, सबसे पहले रॉक के ऊपर ग्रो करता है. दे रिलीज सम केमिकल्स ताकि रॉक सॉइल बन जाए. एंड व्हाई डू वी हैव लाइकेंस? बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी. हमारे पास अलग अलग डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमको हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो दैट्स वन थिंग. पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड मेनी क्रॉप्स. क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी है, वी हैव सो मेनी इंसेक्ट्स इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन. हनी बीज, बटरफ्लाई, मॉथ्स, मेनी अदर इंसेक्ट्स. क्योंकि उनके पास वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, दे कैन कैरी पोलन फ्रॉम one flower to another flower, leading to pollination. Okay, that is there because of diversity. Control of pests and diseases. We use many living organisms to control pests. Pests क्या होता है?
organisms which are harmful to the human beings, mainly in terms of economics. वो क्रॉप डैमेज करते हैं या स्टोर्ड फूड ग्रेन्स डैमेज करते हैं, इसको पेस्ट बोलते हैं. ये रोडेंट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, जो भी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग दूसरा एक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं. ओके, सो इफ देयर इज अ पैरासाइट, वी यूज हाइपर पैरासाइट्स, दैट इज पैरासाइट्स ऑन पैरासाइट्स. जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लेडी बर्ड बीटल को छोड़ देते हैं फील्ड में. ओके, सो कुछ फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वायरस को छोड़ देते हैं. न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, एनपीवी वायरस है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. एंड व्हेन वी नो दैट ये हमारा एनिमीज एनिमी है, सो वी विल मेक यूज ऑफ इट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल. सो बायो कंट्रोल, मेनी ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, जिसकी वजह से हम लोग पेस्ट और डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, हम लोग को एक हाइब्रिड चाहिए, तो वी हैव टू क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ स्पीशीज, नॉट टू डिफरेंट स्पीशीज. वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा या सक्सेसफुल नहीं होगा. सो विद इन स्पीशीज वी नीड वेरियस वेराइटीज सो दैट हमको एक नया हाइब्रिड मिले. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, प्लांट ब्रीडिंग में, सो द मोर डिस्टेंट रिलेटिव्स द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग हाइब्रिड्स. ओके, सो वाइल्ड वेराइटीज और कन्वेंशनल वेराइटीज को क्रॉस करते हैं, एंड वी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ any heterosis. Okay, hybrid vigor को देखते हैं, and that kind of genetical improvement is possible only when we have good amount of genetic resource. Genetic resource का मतलब है कि we have diversity, more genetic resource, and more option of crop improvement. Culture and aesthetic benefits. Imagine आप कहीं किसी पार्क में जाओगे, एक ही तरह का पेड़ है. फॉरेस्ट में जाओगे, एक ही तरह का पेड़ है, मोनोकल्चर. डोंट फील हैप्पी, है ना. अलग अलग फ्लावर्स है, अलग अलग फ्रूट्स है, डिफरेंट कलर्स, ट्रीज, सम बिग ट्री, स्मॉल ट्री. सो ओनली व्हेन यू हैव डाइवर्सिटी यू विल गेट एस्थेटिक हैप्पीनेस. ओके, सो मेंटल पीस, कल्चरल बेनिफिट्स, है ना. हमको, हमारे पास many plants are associated with us in culture religiously. Okay, people worship trees. Okay, so some trees are associated with some specific culture, like ficus religiosa, जो people tree है, that is associated with कौन सा religion के साथ associated है people tree? हाँ, कहाँ से? बुद्धिज्म ना. Where did Buddha got enlightened? निर्वाणा कहां से, कौन सा ट्री के अंडर मिला? पीपल ट्री. ओके, फाइकस रिलीजियोसा. ओके, वो तो आसान क्वेश्चन है. विच वॉज द ट्री अंडर विच वर्धमान महावीरा, okay, महावीरा जैनिज्म, he got enlightened? Okay. Mango, teak, sal, banyan. So it is sal. Okay. Shoria robusta. So this is a tree under which Jains, the 24th Tirthankara, Mahavira, he got enlightened. Okay, just like how Buddha got enlightened. Okay, so we have so many cultural benefits, aesthetic benefits. Diversity नहीं होता तो enlightened भी नहीं होता. नहीं हो जाता किसी maybe some different tree. Okay, this is a question from 2011 prelims. Okay. Try answering this. I'll give you this handouts. इसलिए मैं कुछ डिक्टेट नहीं कर रहा हूं. Okay, so इसको प्रिंट आउट दे देंगे.
सो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो लिख लो, बिकॉज दिस विल यू विल गेट इट. देखो हम लोग अभी अभी वी स्टडीड अबाउट द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. So this question from UPSC prelims 2011, it is basically asking कि what are the values, what are the uses of biodiversity, वही पूछ रहा है. Okay. Biodiversity forms the basis of human existence in the following ways. क्या biodiversity is involved in soil formation? है? Prevention of soil erosion, recycling of waste, pollination of crops. Okay, the answer is 1, 2, 3, 4. All right. This is how the questions have been asked. और इसी ट्रेंड से पूछ सकते हैं. Okay. One thing. Now, biodiversity has so many values. वो इंसान को इतना ज्यादा दे रहा है. Okay. So that is the reason why we have to study about biodiversity. Okay. And only when you know about biodiversity, you can see what is the threat to the biodiversity. Okay. So biodiversity is under threat. And what is causing that threat? Because of variety of factors, okay, maybe direct factors or indirect factors caused by man, biodiversity at present is facing a threat of unprecedented scales. There are different levels of threat which biodiversity is facing. There is species extinction, there is human-animal conflict, so there is invasive species inclusion, there is loss of habitat, loss of habitat है, deforestation हो रहा है, animals extinct हो रहा है. So many things are happening because of loss of biodiversity, and that is because of some of the human activities which humans are doing for their greed, which is affecting them directly or indirectly. Okay. So the threat is because of humans. Okay. So it faces a threat of unprecedented scales. Most of the ecosystems are in different levels of degradation. अलग अलग ecosystem अलग अलग level का degradation में है. They are in different levels of degradation because of the human activities. Okay. So let us see the things. Before this, this is a question. वही क्वेश्चन था क्या? नहीं, अलग है. So answer this question. It's a UPSC prelims question 2012. A very interesting question. एग्जामिनेशन हॉल में मैं नहीं आऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ट्राई ऑन योर ओन. Which of the following can be threats to biodiversity of a geographical area? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism. So who says A? Okay. B, C, D. Okay. So many of you think it is D. 1, 2, 3, 4. See, habitat क्या होता है? The place where animals live. अगर एक फॉरेस्ट है, it is one habitat. Because of various human activities, उसको हम लोग फ्रैगमेंट बना रहा है, अलग अलग पीसेस बना रहा है, जिसकी वजह से एनिमल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, their migration is being stopped, their food availability is cut off, water availability is cut off. वो होता है fragmentation of habitats. Okay. So you agree global warming is a threat to changing climate, changing temperature, fragmentation of habitat होगा. Okay.
इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज आएंगे तो लोकल स्पीशीज को रिप्लेस कर देंगे, दे विल ऑक्यूपाई द एंटायर एरिया. Many of them think 3 and some think it is not the thing. So those who said 1, 2 and 3, why not vegetarianism? I don't know. UPSC said it is promotion of vegetarianism. अगर animals के बीच में भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? चलो ह्यूमंस पे ही देख लो. अगर सोचो कि हम सब लोग वेजिटेरियन बन गए तो बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट कैसे हो गया? More farmlands means more conversion of forest lands into agricultural fields. So where we Okay. cut off for a habitat. Okay. So that is in that way. फूड क्रॉप एक सिमिलर टाइप की होती है, तो it would promote कि वही टाइप की क्रॉप ग्रो की जाए जो कि मतलब पब्लिक उस पब्लिक इवन उस स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी मिल जाती है. कि नॉन वेजिटेरियन प्रमोट करने से डाइवर्सिटी ये नहीं होगा. There should always be balance between vegetarians and non-vegetarians. So for the sake of biodiversity, अगर किसी animal is also a part of biodiversity, right? Okay. So basically, if you promote vegetarianism, when you say diversity, diversity is about natural diversity. Okay. जो भी आप एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो कर रहा है, it is a domestic ecosystem. Okay. And if you promote vegetarianism, that doesn't mean that biodiversity will be under threat. Okay, वो ऑप्शन नहीं है एक्चुअली. यूपीएससी की आंसर में भी यही है कि इट इज ओनली 1, 2 and 3, and promotion of vegetarianism is a very specific thing about human beings, and that too when you promote it, not necessarily people getting converted. So we need to imply things now. Yeah, like promotion, like just by promotion of biodiversity threat हो रहा है is a very हम लोग मतलब बहुत सारे लिंक करना पड़ता है. अगर प्रमोशन कर दिया, अच्छा प्रमोशन किया तो लोग बाग बन जाएंगे, कन्वर्ट बन जाएंगे. अगर कन्वर्ट बनेंगे तो ज्यादा वेजिटेरियन फूड रिक्वायरमेंट होगा, फिर ज्यादा होगा तो हमको लैंड कम पड़ेगी. ये सब अजम्पशन है. आज ज्यादा कम पड़ेगी तो हम फॉरेस्ट को ही काटेंगे, प्लेन लैंड्स जो बैरन लैंड उसको यूज नहीं करेंगे. बहुत स्पेसिफिक. हाँ ना, मतलब इतना ज्यादा लिंक बना के जाओगे. सिंपली प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म क्या है? नथिंग. Why does it has to destroy the biodiversity? It's a simple thing. Okay, उससे biodiversity harm नहीं होगा. Maybe like when you say conversion of agriculture land to forest land अगर होता तो maybe that is directly threatening the biodiversity. But in fact a very interesting question. Poultry farms, not poultry farms, just general cattle farms. It doesn't contribute to pollution but contributes to global warming because it releases methane. एक adult cattle, cow या buffalo, एक दिन में 200 liters of methane निकालता है बर्पिंग से. पता है ना, they are ruminants, उनके 4 stomachs होता है. So पहले वाला rumen होता है. So when they eat these cellulose material, घास फूस वगैरह जो भी है, वो अंदर जाके so they are broken down by a special category of bacteria, archibacteria. Okay, एक होता है उनके स्टोमक में जो convert them into carbon and hydrogen. So then they are acted upon by different microorganisms and they convert it into methane. And the burp, जो गटार क्या बोलते हैं, डकार, okay, sorry, डकार लेते हैं ना, वैसे animals also take डकार, and when they do that they release lot of, both from front and back, they release totally 200 liters of methane per day. Okay, and a young calf will release around 75 liters of methane.
sheeps, goats, they release 25 liters of methane per day, and they are the biggest source of methane emission. Okay, so वो एक है. Poultry farms से क्या है, nowadays we have come up with so much of integrated things ना, like whatever the waste is there in poultry farm, we will feed it to the earthworms, we create vermicompost out of it, we then feed it to the fodder. मतलब ये recycle होता रहता है. Okay, so that's one thing. Okay, so this is one of the, ये हो गया ना. This is another question from prelims 2015. So answer this. It is a state question, but still very challenging. क्योंकि चारों का चारों ना, they are related to biodiversity crisis. Increased atmospheric carbon dioxide से biodiversity crisis हो रहा है because it's leading to global warming. Ozone depletion से हाँ हो रहा है, diversity बहुत सारा UVC radiations आके डैमेज कर रहा है. रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से भी हो रहा है. इंट्रोड्यूस स्पीशीज, इसमें सबसे ज्यादा डायरेक्टली रिलेट किससे हो रहा है? Okay, C is the answer. Okay. Yeah. So even D is very close. Introduced species. Okay. So introduced species or like alien species. अगर वो introduced species के बदले में invasive species होता, that would have been much more closer. डायरेक्टली तो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से है, जितना ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस. सो आंसर इज सी. नाउ फैक्टर्स कॉजिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कॉजेस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड दीज आर द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट वन, डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ स्पीशीज. ओके, बहुत सारे जो नेचुरल हैबिटेट्स है जहां प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स जो नेचुरली रह रहे हैं उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्यों? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, कन्वर्शन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका नेचुरल हैबिटेट्स. देन ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड टारगेटेड एलिमिनेशन. इन सम केसेस उनको हम लोग टारगेट करके एलिमिनेट कर रहे हैं. ओके, से फॉर एग्जाम्पल चीता, अभी चीता का बहुत सारा न्यूज आ रहा है ना. एशियाटिक चीता इट वॉज रीजनली एक्सटिंक्ट. हाँ, हम लोग इंडिया में नहीं है. एशियाटिक चीता अभी ईरान में है. हम लोग जो रीइंट्रोड्यूस किए वो वही स्पीशीज, वही ये नहीं है जो पहले था. इट इज नॉट एशियाटिक चीता वी इंट्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट चीता. Okay, which is called African Namibian cheetah. हम लोग अफ्रीका से लेके आए. सो सबसे पहले इंडिया में एशियाटिक चीता था एंड इन 52 हम लोग इतना उसको एक्सप्लॉइट कर लिए, वी ओवर हंट इट. इन 1952 द लास्ट लिविंग चीता इन इंडिया वाज किल्ड. सो देन चीता बिकम रीजनली एक्सटिंक्ट इन इंडिया. ओके, उसके बाद हम लोग अभी 2 years हो गए, हमारा प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन हम लोग रिलीज किए थे ना, 10 या 11 चीता लेके आए थे अफ्रीकन. अभी कितना बच्चा है? हाँ, 2 बच्चा हुआ, 2. ओके, दे डाइड, दे कुडंट अडॉप्ट, नहीं हुआ वो. इट वाज पार्शियली फेलियर प्रोग्राम, सब मर गए. अच्छा, व्हाई डिडंट वी इंट्रोड्यूस एशियाटिक चीता फ्रॉम ईरान? हाँ, किसने? सो सरप्राइजिंगली द आंसर इज राइट. उन्होंने दिया नहीं एक्चुअली. सो दे हैड कंडीशंस. ओके, सबसे पहले उन्होंने मतलब वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. ओके, दूसरा था कि वो मान गए थे, दे एग्रीड कि हम लोग चीता देंगे पर आपको लायन देना पड़ेगा.
ओके और लायन कहाँ पे है इंडिया में? गिर में. एशियाटिक लायन का इट्स एंडेमिक, पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं है. इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर लायंस आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट. और वो गिर में है. ओके गुजरात में है. एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स. बोल रहा हूं कि गुजरात में है और उसको देना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो मध्य प्रदेश को नहीं दे रहा. यू नो दैट there is a you know order की, so it has to be relocated. Lion को आप relocate कर लो. And that was a question actually. Okay, UPSC का question था recently. There is a plan to relocate the Asiatic lions from Gir forest to which of the following. So मध्य प्रदेश में एक जगह उन्होंने फाइनलाइज किया था. कौन सा? That was the option में था वो प्लेस. कुनो पालपुर. ओके कुनो में रिप्लेस करने का हुआ था बट स्टिल बगल का स्टेट को नहीं दे रहे. ओके अब ईरान को क्या देंगे हम? क्या चेंज? कौन माइग्रेट? लायंस इतना दूर माइग्रेट थोड़ी करेंगे. कंफर्टेबल है, उनका जोन है, उनके हैबिटेट है. हाँ वो माइग्रेट थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है. दे आर नॉट माइग्रेटिंग, दे आर एक्चुअली स्प्रेडिंग. क्योंकि वो इतना ओवर डेंस हो गया है पॉपुलेशन कि दे आर मूविंग आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे आर गोइंग टू विलेजेस. विलेज में वो खा रहा है, रिवेंज किलिंग हो रहा है. सो दे हैव बीन ओवर पॉपुलेटेड. उनको रिप्लेस करने का मतलब रीलोकेट करने का बहुत जरूरत है. प्राइड अब मध्य प्रदेश को नहीं दे रहा है क्योंकि वो हमारा मतलब फ्लैग के ऊपर है, गुजरात के फ्लैग के ऊपर है लायन. सो दे थिंक इट्स अ प्राइड. टूरिज्म इफेक्ट होगा. दे वोंट बी मोनोपोली. हाँ बिल्कुल होता है. अभी रिसेंटली सम स्टेट हैड रिलीज्ड इट्स फ्लैग. नो कर्नाटका भी की है ना कि दैट्स लाइक यू नो फ्लैग विथ रेड एंड येलो. ओके सो दैट इज कर्नाटका फ्लैग. सो अलग अलग स्टेट फ्लैग्स होते हैं, उनके ऊपर है. सो दैट इज देयर प्राइड. सो यू कांट एक्चुअली यू नो decide upon this thing. Okay, so that is the thing. Loss of natural habitat. So basically when you do this, अगर आप किसी एनिमल को कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू चेक इज द कंपैटिबिलिटी ऑफ द हैबिटेट. वो कंपैटिबल था. यू स्टडी इन व्हाट टेम्परेचर दे कैन थ्राइव, व्हाट आर द फूड दे नीड, क्या वो अवेलेबल है. अगर वो डियर्स या ब्लैक बक या जो भी एनिमल्स को खाता है वो है इधर, फूड अवेलेबिलिटी एंड दैट टू इन गुड क्वांटिटी. वो सब चेक करने के बाद ही दे विल अलाउ. हाँ किसी भी कारण हो पर वो नो नहीं है, वो दे डिडंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ओके सो फेकंडिटी नहीं था. ओके सो मॉर्टेलिटी वाज हाई, सो द पॉपुलेशन डिक्लाइन. है ना, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन. ओके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक एंड इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. सो एक्सोटिक इज anything which is outside a natural historical range. वो historically जिस एरिया में ग्रो कर रहा है या रह रहा है उससे बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एक्सोटिक. ओके सो एक्सोटिक और इन्वेसिव. ऐसा नहीं है कि हर एक एक्सोटिक स्पीशीज और इंपोर्टेड स्पीशीज इन्वेसिव हो जाता है. देयर आर सो मेनी स्पीशीज which are imported and which is doing good. वो invasive नहीं बना, but most of the invasive species becomes alien क्योंकि उनका natural habitat नहीं है. They get much more favorable environment ताकि वो बाकी सबको replace कर देते हैं. They will occupy the entire area. One such plant is Prosopis juliflora, जो UPSC prelims में पूछा गया था. Okay. So secondary extinction. What is the secondary extinction?
And then the other species are dependent on the species that got extinct. Like for example, mutualism. एग्जैक्टली ओके। प्राइमरी एक्सटिंक्शन में जो है वो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, पर उस स्पीशीज के ऊपर सो मेनी स्पीशीज आर डिपेंडिंग। ओके, से फॉर एग्जांपल डियर, ऑन डियर चीता इज डिपेंडेंट, टाइगर इज डिपेंडेंट, लायन इज डिपेंडेंट। इनका एक्सटिंक्ट होने से उनका जो डिपेंडेंस है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, दैट इज मोर डेंजरस। प्राइमरी एक्सटिंक्शन से सेकेंडरी एक्सटिंक्शन ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उसमें ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। देन अदर कॉजेस लाइक डिस्टर्ब इन इकोसिस्टम डायनामिक्स ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत सारा एनिमल्स जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, they are migrating, they're some of them who could not adopt and migrate, they're dying, they're getting extinct. Okay, ecosystem and habitat fragmentation and degradation due to various type of pollution की वजह से degradation हो रहा है, habitat fragmentation हो रहा है, and all these things are happening. Okay. So that is the causes for biodiversity. Let us see them one by one. So habitat loss and fragmentation. Okay. So एक इसके लिए हो रहा है, क्यों habitat fragment हो रहा है? Because we are doing deforestation. हम लोग पेड़ काट रहे हैं. Lot of forests have been cut down. Okay, देखो ये अकेला बैठा है तो उनको रहना था जंगल में in between the trees. Okay. So they are losing their habitat. They're nowhere to go. इनके पास कहीं जगह नहीं है. That is the reason why lot of animals are coming into human habitat. कि हम लोग उनका habitat destroy कर रहे हैं. Okay. So deforestation. What is the difference between deforestation and afforestation and reforestation? पहले ये बताओ, afforestation और रिफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस? So in which we are planting in an area where plants were never there or it has been long absent. Reforestation, okay. So कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है? एफोरेस्टेशन, क्योंकि वहां दैट लैंड डजंट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, इसीलिए नेचुरली उधर प्लांट्स नहीं है। रिफॉरेस्टेशन में ऑलरेडी प्लांट्स है, दैट मींस द सॉइल इज गुड एनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, इसलिए उधर काटा है हमने। ओके, सो देन वी आर गोइंग ऑलराइट। डिफोरेस्टेशन एंड फिलिंग ऑफ ट्रीज। सी, ट्रीज को हम लोग, अगर ये सब वुड का बना हुआ है तो पेड़ से ही बना होगा, लकड़ी से बना होगा, मतलब लकड़ी काटा होगा लीगली। देयर इज अ प्रोसेस वेयर वी लीगली कट द ट्रीज विच इज कॉल्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज। और उसको और डिफोरेस्टेशन में क्या डिफरेंस है? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है और जो पुष्पा करता है। Okay. Most of the they have that obligation to again plant certain amount of trees. Yes. Okay, that is the key. Deforestation is intentional removal of forest without any intention of replanting. हम लोग किसी पेड़ को काट रहे तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। अगर आपके खेत में, आपके बाउंड्री में फॉरेस्ट ट्री है, आप उसको काटना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। परमिशन मिलने के बाद जब काटोगे ना, you should make sure that they are planting some replacement. ऐसा काट के आप छोड़ नहीं सकते। That comes under felling। और जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मर्चेंट्स वगैरह परमिशन के साथ काटते हैं, they'll make sure that
रीजनरेशन हो रहा है, देयर ऑलरेडी सम रीग्रोथ हैपनिंग देयर, या वो लोग आर्टिफिशियली रीजनरेट करते हैं. इफ यू डोंट डू दिट, that is called deforestation. You are destroying a forest to such an extent that it doesn't support natural flora and fauna. That is deforestation. Okay. So इसके वजह से habitat loss हो रहा है. Population, इतना population आ रहा है कि we want to explore the natural resources. Mining हो रहा है, roads बन रहा है बीच बीच में. That is splitting up the habitats. इसलिए बहुत सारे एनिमल्स जो रोड क्रॉस करते समय मरते, दैट इज देयर नेचुरल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं जिसमें एलिफेंट्स जाते हैं. वो उनका हजारों साल से वो बना हुआ है. दे नो ओनली दैट रूट, उसके अलावा जानते नहीं. हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस, रोड्स. ओके, सो बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ माउथ्स टू फीड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ड्राइंग ऑफ वेटलैंड्स. Okay, so wetlands are drying, and all these organisms which are dependent on wetlands, they have nowhere to go, because wetlands are those areas which are migrational stopovers, breeding grounds for many animals. उनके habitat ही नहीं है, कहाँ breed करेंगे? Okay, animals move, you don't know कहाँ से कहाँ तक ये process के लिए. Have you heard of Amur falcon? हाँ, ये आता है साइबेरिया से. ओके, दे क्रॉस चाइना, दे क्रॉस हिमालयन माउंटेन. ओके, क्रॉस करके पहले दे विल रेस्ट इन नागालैंड. नागालैंड के लोगों को पहले ऐसा था कि जब जिस सीजन में बर्ड आता है, दैट वाज फेस्टिवल सीजन फॉर देम. वो लोग इसको मार के हंट करके खाते थे. दे यूज्ड टू ईट एंड दे यूज्ड टू, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. लॉट ऑफ बर्ड्स. सो जो बचा कुचा बर्ड्स है वो वहां से दे विल टेक अ फ्लाइट, वन स्ट्रेच पूरा इंडिया पार करके दे विल नेक्स्ट लैंड इन वेस्टर्न घाट्स. ओके, दे विल स्टॉप हियर बिकॉज दे वांट टू एनर्जाइज. यहाँ बहुत सारा फॉरेस्ट है, बहुत सारा फ्रूट ट्रीज है, उसको खाने के लिए रोकते थे. ओके, रोक के खा के एनर्जाइज होके दे विल स्टॉप एट वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में दे विल ईट अप some fruits and energize again. They'll take one take off, entire Arabian Sea they'll cross, they'll go to South Africa. Yes, so they're like, they'll spend the winter there. Siberia में बहुत ठंड है. So then they'll come back to Western Ghats, then Nagaland, then to their place. ये उनका migratory flyway है. Okay, so now because of the Nagaland Forest Department, because the DFO who was in charge of this saving of Amur falcon program was my very close friend. Okay, my classmate, he was a DFO. So he was like, sharing all those his experience. कि उन्होंने इतना नागालैंड के जो ट्राइब्स है उनको परस्यू किया है, and they have convinced them not to kill, and surprisingly it's been a very successful program. Internationally उसका recognition हुआ. So the killing of Amur falcon had drastically come down in Nagaland. Okay, क्योंकि उनका population dwindle हो रहा था, इतना मारते थे वो. Okay, so that is the thing. The rain, हाँ. They cut down Fine, then no issues. Like it's the felling system. Many people do that because they want to increase the income from that land. Basically, it's a tree anyway. Okay, so that is possible, and that doesn't come under deforestation. Unless you are planting something, a replacement. Not actually. See, basically you are doing this only in plantations. You are not doing it in natural forest. Natural forest में जो होता है उसको हम natural regeneration बोलते हैं. वो जो seeds disperse होके वो खुद आके, okay, they do it naturally. This activity, whatever they do it only in commercial plantation, artificial forests में. बहुत कम है. Okay, doesn't affect the biodiversity that much. Rainforest destruction. Rainforest is one of the biggest repository of diversity.
हम लोग इतना रेन फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं कि लॉट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। एंडेमिज्म वहां पे खत्म हो रहा है। सो दैट इज लीडिंग टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का ये है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ओके, दूसरा रिजल्ट, factors affecting the threat to biodiversity. So because we are destructing their habitats, they're nowhere to go. Okay, so the wild animals and people, when they intact, so it gives a negative impact both to the animals as well as humans. Lot of humans are killed. अभी कल का भी news है, there is one person killed by elephant in Karnataka. कर्नाटका में एक जो एरिया है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हासन, स्पेशली सकलेशपुर, इट्स इन द स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, सो कॉफी प्लांटेशंस बहुत सारा है वहां पे, इट हैज बिकम अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अभी लास्ट 2 months बैक अ शूटर हु वाज अ शार्प शूटर, he went to tranquilize the elephant. वो शूट करने के बाद वापस आके उनको मार दी। He was a very very renowned sharp shooter of elephants, tranquilizer. Forest department hires them. तो इतना ज्यादा एलिफेंट का प्रॉब्लम हो गया उधर कि every day there is some other case. Humans kill elephant and elephants kill humans. Okay, so because we are actually destroying their habitat, they are destroying their regular pathway, so they are getting diverted, they are coming to him, and now they are almost getting coexist. यहाँ ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, बगल में वो अपना खाते रहते हैं, they have also started accepting कि हाँ, this is a part of the society. Very fear, near future ये ऐसा होगा कि बोले साथ में रह लेंगे, रहने दो, तुम बगल में रहो, मैं भी बगल में रहता हूँ, will coexist. Man and Biosphere program successful हो गया था। So why there is human elephant conflict? Encroachment. Okay, so we are encroaching the forest. फॉरेस्ट रहता है एंड उसके बगल में एक छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड, अगले साल गया तो इनका फील्ड इतना बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। ओके, सो देन देयर विल बी इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज एंड टोटली दे विल ऑक्यूपाई द एंटायर हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, पता ही नहीं चलेगा। They'll cut down the trees and do that. जो एनिमल्स यहाँ पे कहाँ जाएंगे? They will say कि ये हमारा घर है, अब बोल नहीं है, हमारा खेत है। Okay, it's a man who is actually encroaching the land of animals, habitat of animals. Industrialization, industries बढ़ रहा है, for that they need lot of raw materials. Forest based industries, उनको बहुत सारा लकड़ी चाहिए, so they encourage the black market. Okay, again Pushpa. So these people destroy the forest a lot. कांतारा देखा आपने? हाँ? It's all about forest, देखोगे ना, you will see all your syllabus in the movie. उसमें रिजर्व फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 1927 का, ओके, ट्राइबल वेलफेयर है, फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000, वो सब याद आ जाएगा आपको। ओके, सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज देयर इज ह्यू मच ऑफ थिंग। देन लाइफ स्टॉक इन इंडिया, द नंबर ऑफ livestock is having more number of animals, and this thing is a pride. जिसके पास ज्यादा गाय है, भैंस है, वो सबसे बड़ा आदमी है। So it represents the social status and more livestock. अब उनको कहाँ ये करेंगे? So where will you give them that food? What do you do? Take them to jungle. Okay, so वहाँ human animal conflict होगा, राइट? कृष्ण जी भी करते थे ना वो, so he also used to take cows to the forest. Okay, it's a very long practice in India कि क्या बोलते हैं, मवेशी लोग, those are the guys who take the cattle to
हाँ, मवेशी एनिमल्स है कि ह्यूमंस है? एनिमल्स है। और उसको लेके जाने वाला क्या है? अच्छा ठीक है। तो समझ गए ना, दैट्स लाइफ स्टॉक, यू नो, हैविंग मोर लाइफ स्टॉक। सो वो एनिमल्स के लिए तो वो फूड है, हाउ डू दे नो दिस इज देयर स्टेटस? तो उनके लिए तो खाना है, वो खाने आते हैं, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। इको टूरिज्म, horrible states. Sometimes I feel very sad looking at the tiger. Tiger is one of the super predator, one of the strongest, big cat in the world. मतलब पहले ऐसा था कि किसी जंगल में टाइगर था तो शाम को कोई निकलता नहीं था, they will be very careful in going there, उतना खौफ था। अभी वीडियोस आते हैं ना, सफारी जो ओपन जिप्सी, ऐसे में कोई एनक्लोज नहीं है, खुला जिप्सी में जाते हैं, टाइगर को सामने खड़ा रहते हैं, टाइगर विल जस्ट उनको देखते हैं, लाइक इट विल जस्ट, वही तो ना, टाइगर्स आर बीइंग डोमेस्टिकेटेड नाउअडेज, वो लोग, मतलब अभी टाइगर के डर ही खत्म हो गए। सो देयर नोबडी इज अफ्रेड ऑफ टाइगर्स। और टाइगर भी आराम से पोज दे रहा है एंड फोटो वोटो खिंचवा रहा है, एंड दे हैव इट, इवन इट हैज, आई थिंक हैव एक्सेप्टेड कि हाँ ये भी पार्ट ऑफ जंगल ही है, ये भी। हाँ फोटो खींच के जाओ, जल्दी से जाओ, मतलब इट डजंट अटैक, बगल में अपने आप चले जाते हैं। ओके, टाइगर का वो नेचर नहीं है, इट्स, टाइगर इज अ सुपर प्रेडेटर, टॉप ऑफ द थिंग, कीस्टोन स्पीशीज। पता नहीं, मतलब हाँ, नहीं, दे अटैक एवरी टाइम, दे नोबडी इज अलाउड इन देयर टेरिटरी। वो सॉलिटरी एनिमल है, उनका जो मतलब एक टेरिटरी बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी एनिमल है तो मार देते हैं, इवन इफ नॉट फूड। दैट इज द नेचर ऑफ दैट प्रेडेटर। पर हम लोग अंदर जाके उसको फोटो खींच रहे, मजाक कर रहे हैं उसके साथ, एंड इट्स टॉलरेटिंग। maybe they, like some tigers are being changed, change हो रहा है, उनके behavior change हो रहे हैं। Okay, ecotourism means climatic factors. Okay, because of lot of climatic factors, man-animal conflict is, being there, because climate is changing the geographical structure. जब कभी forest था, तो because of climate change, that species cannot no more grow in that area, change हो रहा है। So it's one thing. Over exploitation, हम लोग जितना जरूरत है उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज लीडिंग टू अनसस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लेकिन वी आर नॉट having the same amount of resources which our ancestors had. Sustainability का definition क्या है? In the way that the meet the needs and at the same quantity which we are doing. हम लोग जितना रिसोर्स हमारे लिए ले रहे हैं, उतना ही रिसोर्स उनको भी अवेलेबल होना चाहिए। Okay, if we are taking, like say, for example, आपका बैंक में 1 लाख रुपए है, दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, इससे देखो हर साल 1% इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, सो हाउ मच इज द इंटरेस्ट? हर साल कितना मिल रहा है? 1000 रुपीज, है ना? 1000 रुपीज इज द इंटरेस्ट यू आर गेटिंग ऑन योर प्रिंसिपल. So you are allowed to take out only, withdraw only 1000 rupees every year. And every year if you keep doing it, then even of the next generation, उनको भी 1000 ही रहे, 1 लाख रहेगा, उनको भी 1000 ही मिलेगा. So you should, remove only the extra increment which is giving. Principal उधर ही रहना चाहिए फॉरेस्ट में. जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है ना, उसी को हम लोग निकालना चाहिए. That is when sustainability will be attained. Okay? अगर आप 1000 के लिए 2000 निकाल दिए, तो this principle will come to 99,000. फ्यूचर जनरेशन को 1000 नहीं मिलेगा, 990 रुपीज मिलेगा. Okay, you'll get less than what you are getting. So that is unsustainability. Okay?
सो ओवर एक्सप्लोइटेशन का अलग नाम है हार्वेस्टिंग स्पीशीज फ्रॉम द वाइल्ड एट द रेट फास्टर देन नेचुरल पॉपुलेशन कैन रिकवर. देखो, गेटिंग समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट नेचर इज नॉट बैड. फिशिंग गलत नहीं है, क्योंकि फिशिंग को आप कर रहे हो तो फिश मल्टीप्लाई भी हो रहा है. ओके, सो द रेट एट विच दे आर मल्टीप्लाइंग, इफ यू टेक मोर देन दैट, then it becomes unsustainable. Okay, so when you are hunting, जितना population increase हो रहा है उससे ज्यादा hunt करोगे, then it becomes unsustainable. Okay, so harvesting the species from the wild at the rate faster than natural population. Forest trees भी आप निकालोगे ना, जितना वो reproduce हो रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. जितना replacement हो रहा है उतना ही आपको remove करना चाहिए. Okay, so that is the thing. ये पूछ रहे ना, what are the other words of over exploitation? Overuse, over utilization, development, exploitation. देखो, जितना एक एक आदमी के पास सबसे ज्यादा काउज होगा तो all the grasses will be over exploited. Okay, it's called over grazing. Okay, over hunting, over exploitation of timber, over fishing. So this will lead to the extinction of species. Okay. Alien species invasion. Okay, it's another threat to biodiversity. Okay, so alien matlab, what is alien? Foreign, not belonging to that natural territory. So generally हमारा हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज जो है वो हमें एलियन को कन्विंस किया है कि इट इज समथिंग नॉट फ्रॉम अर्थ, इज एलियन. जादू, ओके, जादू वाज एन एलियन, पीके वाज एन एलियन, सुपरमैन. ओके, सो नाउ इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एलियन का मतलब है कि species that is established outside its natural past or present distribution. So जो भी उनका past था, natural past था, या presently जो भी है, so उसके अलावा उसको introduce किए तो then it becomes alien to that area. Example, eucalyptus. It never was grown in India. Historically वो natural habitat नहीं है. हम लोग उसको ऑस्ट्रेलिया से लाके इंडिया में प्लांट किए. It was so wonderful. किसी भी जगह प्लांट कर दो, इट यूज्ड टू ग्रो, फास्ट ग्रोथ रेट, इतना अच्छा टिम्बर. ओके, सम पीपल स्टॉप्ड एग्रीकल्चर, वो लोग सिर्फ यूकलिप्टस प्लांटेशन ग्रो करना शुरू किए. इतना प्रॉफिटेबल, मोर देन एग्रीकल्चर. नाउ वेरी रिसेंटली वी रियलाइज दैट इट इज अ नॉट ओनली एलियन स्पीशीज, इट इज ऑल्सो इन्वेजिव. जहां जहां जाता है वो बाकी सारा प्लांट्स को खत्म कर देता है, बिकॉज it extracts so much of water from the ground कि बाकी plants को मिलेगा ही नहीं, तो naturally मर जाएंगे. Okay, so whose introduction and spread threaten the biological diversity, उसको हम लोग alien invasive species बोलते हैं. Okay, majority of invasive species are alien, but not necessarily all species are alien species are इन्वेसिव. इन्वेसिव गलत है. इन्वेसिव मतलब इन्वेड करना, उसको पूरा खत्म करना बाकी स्पीशीज को. हर एलियन इन्वेसिव नहीं होता. और उसी तरह नेटिव स्पीशीज जो है, जो एलियन नहीं है, वो भी कभी कभार इन्वेसिव बन सकता है. ओके, सो अ नेटिव स्पीशीज कैन बिकम इन्वेसिव अंडर एनवायरमेंटल स्ट्रेस. ओके, और एनवायरमेंटल कंडीशंस. बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल कंडीशन से जो नेटिव स्पीशीज है वो भी एलियन बनता है. ओके, सो देखो, एज पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी देयर आर 53 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच आर एलियन एंड इन्वेसिव. ओके, 55 aquatic plants are alien invasive. 47 agriculture ecosystems we have alien invasive. Okay, and 14 island ecosystems are alien invasive. Totally there are
around 169 alien invasive species in India, including eucalyptus. So कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा इन्वेजन हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, पूरा वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, ओके, ओडिशा. So these are the areas. Answer this question. ये 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था. So its extract is widely used in cosmetics, tends to reduce biodiversity in the area in which it grows. Its extract is used in synthesis of pesticides. None of the above. Who says A? B? Okay. So obviously we are studying about invasive species. आप तो हाथ उठा ही लोगे. So these are some of the invasive fauna animals found in India. You'll surprised to know कि आप जानते हैं कि इतना सारा वो स्पीशीज है पर you don't know if it is invasive or not. Okay, पपाया मीलीबग एक तरह का मीली बग है जो पपाया पे अटैक होता है, व्हाइट स्पॉट्स होता है पपाया के ऊपर. देन अफ्रीकन एप्पल स्नेल, स्नेल फाउंड इन गार्डन्स. अमेजोन सेल कैटफिश, ये है, इट इज इन्वेसिव. अगर आप एक्वेरियम में छोड़ दोगे ना बाकी फिश को खत्म कर देंगे. सेम इज विथ गोल्ड फिश. सो आपने देखा है गोल्ड फिश इज ऑलवेज अकेले एक ही स्पीशीज होता है, दूसरा फिशेस के साथ नहीं रखते उसको. या गोल्ड फिश रखने हैं तो पूरा पूरा गोल्ड फिश रख लो 10-15 बड़ा एक्वेरियम में, या फिर छोटा एक्वेरियम में अकेले सिंगल. अब दूसरा फिशेस को गोल्ड फिश के साथ ये खा खा के उसको परेशान कर देंगे, मार देंगे. दे विल इन्वेड, दे विल खत्म कर देंगे बाकी स्पीशीज. सो दे आर गोल्ड फिश इज अ इन्वेसिव स्पीशीज. ये तो पता है हाउस गी को, चिपकली, इट इज दूसरा इंसेक्ट्स को आने नहीं देते. So it won't allow other thing to be there. वो खत्म कर देंगे सबको. It is invasive. कॉटन मिली बग, कॉटन के ऊपर एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं. इंडियन बुलफ्रॉग. So this is invasive species. Okay. So invasive animal species in India. So they include both alien and native. Okay. And most of them are alien. So this is invasive flora. It's not alien invasive, just invasive. Okay. They have needle brush. Okay. Black wattle, goatweed, prickly poppy seeds. Poppy seeds कहाँ पे? पॉपी सीड्स नहीं देखे, बहुत नशीली होते हैं. हाँ, ओके. सो प्रिकली पॉपी, टोडी, ताड़ी बोलते हैं, कल्ड बोलते हैं. ताड़ी वो साउथ में, मतलब दे हैव दिस, इफ यू हैव सीन सम साउथ मूवीज, तो बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, उसमें ऊपर मटका बंधा रहता है. सो उसको पत्थर मार के जाके सब हीरोइन पीती है. You don't see, not seen that. Very common scene in Telugu movies, Telugu songs. So generally क्या है, वो एक छोटा सा ये करके they will tie this मटका, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वो कलेक्ट होता रहता है. हाँ, सफेद. It's very nutritious in the morning and but it turns very. सनराइज से पहले पिया तो इट वेरी. हाँ 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 पिए उन्होंने. कौन 5 बजे उठेगा उसको पीने के लिए? बेसिकली दारू है वो देसी. ओके. सो इट्स दे ड्रिंक इट.
सोमरस नहीं, टाड़ी बोलते हैं उसको। सोमरस भगवान पीते थे वो उधर से, ये जैसे क्या तो वो है, दैट इज द यू नो ताड़ी पाम के पाम ट्री। प्रोसोफिजुलर स्प्लोरा मेस्क्यूटे भी बोलते हैं। वाटर हायसिंथ ये देखा आपने, लॉट ऑफ दिस इन्वेसिव, बाकी सबको खाली कर देते हैं। थॉर्न एप्पल जो चिपकता है ना कपड़े पे, अब चलते हैं तो इट विल, सो दैट इज द थिंग। लैंटेना कैमरा, सो ये क्या, टच मी नॉट प्लांट नहीं, ये दिस इज टच मी नॉट प्लांट। लैंटेना कैमरा ये है। टच मी नॉट प्लांट जैसे टच करते हो इट विल क्लोज इट्स लीव्स। 4 o'clock प्लांट है। देन पार्थेनियम, कांग्रेस प्लांट बोलते हैं इसको। दिस इज इन्वेसिव, यू नो ये, हाँ इसको कांग्रेस प्लांट भी बोलते हैं। नहीं सुना आपने? आपने कभी एनएसएस एनसीसी नहीं किया? कोई भी एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी सर्विस स्कीम या नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, मतलब जो भी है, कंपलसरी है कि आपको एक खाली ग्राउंड पे लिया जाएगा, इस तरह का चीजें आपको मिलेगा। ओके, सो इट विल जस्ट, आप फील्ड कोई भी फील्ड जाओ, उसको 1 महीने खाली छोड़ दो, यू विल सी समथिंग ग्रोज देयर, वही है कांग्रेस प्लांट। ओके, तो पूरा ग्रो हो जाता है ना, देन यू हैव टू क्लीन इट। आप कितना भी क्लीन करो, फिर 1 महीने के बाद आओ, इट विल हैव ग्रोन अगेन। बिकॉज इसको निकालने से पहले यू शुड मेक श्योर दैट ये जो सीड्स है ना, ये जो फ्लावर्स है, फ्लावरिंग स्टेज में निकालोगे तो एक पेड़ निकालोगे, यू विल बी सोइंग 100 सीड्स, उसका सीड्स गिर जाता है उधर। ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोशल सर्विस यू कैन डू इज रिमूव दिस प्लांट्स। तो इसको कांग्रेस प्लांट क्यों बुलाते हैं? जस्ट लाइक कांग्रेस। ओके, सो द थिंग, अमेरिकास ने इनको इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर भी बोलते हैं, कि जब वो प्लांट्स दे रहे थे तो 1-2 सीड्स इसको साथ साथ में भेज दिए थे, 1-2 प्लांट्स टू इंडिया। सो सिंस देन, ओके, दैट्स बीन यूकैलिप्टस, पार्थेनियम। सरप्राइज से आपने देखा होगा पूरा, आप यहां से घर जाते समय आपको बहुत सारे मिलेगा साइड में ड्रेनेजेस में जो। ओके, okay. 2018 का एक क्वेश्चन है, जस्ट रीड इट, यूपीएससी प्रीलिम्स का। आई विल गिव यू टाइम। पढ़ ली? The term sixth mass extinction or sixth extinction is often mentioned in news.
इन कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ 6 मास एक्सटेंशन किसकी वजह से होने वाला है, अभी हो रहा है, ओके, 6 इट्स इन प्रोग्रेस, तो उसका कारण क्या है? वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग विथ indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in loss of good native ecosystems. बहुत सारी जगह पे हम लोग क्या है, मल्टी मिक्स्ड कल्चर नहीं कर रहा है, what we are doing is मोनोकल्चर, ओके। तो एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर वजह से क्या हो रहा है, और बहुत सारा केमिकल यूज करने से नेटिव इकोसिस्टम खराब हो रहा है, इसलिए मास एक्सटेंशन हो रहा है, ओके। सेकेंड, फियर ऑफ पॉसिबल, ये हो रहा है ना, वी आर डूइंग मोनोकल्चर, वी आर यूजिंग केमिकल्स, इसकी वजह से नेटिव इकोसिस्टम्स खराब हो रहे हैं, पर इज इट व्हाट इज सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। सेकेंड, fear of possible collision of meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused mass extinction of many species including dinosaurs. ऐसा 65 million years ago क्या हुआ था, एक मेटेरोइड आके अर्थ पे गिरा था जिसकी वजह से बहुत सारा डायनासोर्स मर गए, एंड इसी तरह अभी होने वाला है। इज देयर एनी न्यूज़? Like NASA also conducted this meteorite, but they shifted its orbit. अभी कुछ है ना, अर्थ के बगल में एक मेटेओराइट है, देयर इज अ मेटेओराइट, एंड उसके अराउंड एक और मेटेओराइट घूम रहा है। इट वाज इन न्यूज लाइक अराउंड 2.5-3 months बैक, 3 महीने पहले था कि मतलब दैट मेटेओराइट हैज कम वेरी क्लोज टू द अर्थ, एंड देयर इज अ लाइक यू नो स्पेकुलेशन दैट कि हो सकता है कि वो अर्थ पे आ जाए, बहुत बड़ा, सो वेरी वेरी हाई बिग मेटेओराइट, पर उतना डेंजर नहीं है, इट्स नॉट दैट यू नो अलार्मिंग, क्योंकि वो थोड़ा दूर है, बट इट हैज कम वेरी क्लोज टू द अर्थ, ये न्यूज में है, एंड यू नो द थिंग। थर्ड, लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग देयर कल्टिवेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड which may cause the disappearance of good native crop plants and the loss of food biodiversity. So because there is a lot of GMOs, genetically modified crops, ये भी एक बहुत सारा current affairs news है कि genetically modified crops are being opposed a lot. So इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे native crops हो रहा है। So what are the genetically modified crops grown in India? The only one that is grown is wheat. BT brinjal, No. It was temporary. drought and salinity tolerant rice, no? Okay. Rubber, but BT rubber, okay, और दारा हाइब्रिड मस्टर्ड। So in India, except for BT cotton, there is no other crop, genetically modified crop, which has been approved. अभी तक हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा क्लोज आया था बीटी ब्रिंजल, अभी सबसे ज्यादा क्लोज आया है मस्टर्ड, उसके अलावा बाकी किसी को भी परमिशन नहीं मिला, इट्स ओनली वन क्रॉप। ठीक है, बीटी कॉटन आ गया, तो अभी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड is there in which BT cotton has been cultivated? कितना परसेंट होगा? BT cotton इंट्रोड्यूस किया 2098-99 में, उसके बाद उससे पहले there are so many varieties, cotton varieties grow कर रहे थे। जब से BT cotton इंट्रोड्यूस हुआ तो कितना परसेंट ऑफ लैंड को उसने ऑक्यूपाई कर लिया? कैन यू गेस? 93% BT cotton। एनी अदर? हाँ 50, 99.5, 99.5% of the cotton grown in India is BT cotton. कोई लोकल कॉटन नेटिव वेराइटीज ग्रो ही नहीं कर रहा। इट हैज रिप्लेस्ड ऑल द लोकल वेराइटीज। एक्सटिंक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास लोकल वेराइटी का जर्म प्लाज्म है, कभी भी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर
कमर्शियली 99.5%, 5% इधर उधर कोई लोकल फार्मर या एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं. ओके, अदरवाइज ऑल कमर्शियल ग्रोन कॉटन आर बीटी कॉटन. सो बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गुड नेटिव वेराइटीज लॉस हो रहा है. ये हो तो रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज द थिंग, बट इज इट 6 mass extinction? Then mankind's over exploitation, misuse of natural resource, fragmentation, loss of natural habitats, destruction of ecosystem, pollution and global climate change. Okay, so this is causing 6 mass extinction. Who says A? B? Okay, C? D? Okay, so it is the thing. पहले like you know agriculture से क्या है, losses तो हो रहे, that all the 4 statements are right, but mass extinction हो रहा है, वो this is the reason, D is the reason. It is because of over exploitation, it is because of you know misuse of natural resources, it is because of fragmentation and others. We are having the 6th mass extinction which is happening. Okay, so let us have a slight look at, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है 2018 में, so this topic is good. See, in the past 500 years, around 784 species have gone extinct. When you say an organism is extinct, that means उनका जो last living individual है, तो स्पीशीज का जो आखिरी इंडिविजुअल है वो मर जाएगा, तब बोलते हैं कि दिस स्पीशीज हैज गॉन एक्सटिंक्ट. एग्जांपल डोडो. ओके, सो मेनी स्पीशीज. ऐसे उसी तरह देयर आर अराउंड 784 स्पीशीज व्हिच हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन द 500 years. एंड पूरा ये जो एपिसोड्स है एक्सटिंक्शन का हम लोग 5 एपिसोड में बांट सकते हैं. सो फर्स्ट, mass extinction happened 444 million years ago. Okay, जिसको हम Ogdovian Silurian extinction बोलते हैं. Okay, so this was the time during Ogdovian Silurian age. Then around 383 to 359 million years ago second episode हुआ, late Devonian extinction बोलते हैं. Okay, 352 million years ago Permian Triassic extinction. Okay, and 201 million years ago Triassic Jurassic extinction. You know, this happened in 201 million years ago. And 606 million years ago Cretaceous Paleogene extinction. Dinosaurs went off here. जो 4th episode था उसमें dinosaurs extinct हुए. So this is the 5th extinction and presently this is happening. 6th extinction is in progress. Okay, ये अभी हो रहा है. Okay, and for every extinction there are different reasons. Ice age एक reason था. Okay, Ogdovian Silurian में, इसमें meteorite का reason था. Okay, falling of meteorite on Earth. Now, whatever the extinction which is happening, it is the 6th mass extinction. So Earth is currently experiencing a biodiversity crisis. Okay, हो रहा है, and the extinction threatens up to 1 million species of plants and animals. मतलब अभी जो 6th extinction है उसमें डर है कि up to 1 million species of plants and animals might go extinct. यही predict किया है, this is the prediction. So what are the reasons for this 6th mass extinction? Deforestation, hunting, overexploitation, habitat and ecosystem destruction, pollution, climate change, invasive species and others. And सबसे डरावनी चीज है कि अभी जो हो रहा है ना 6th mass extinction, ये पिछली बार से 100 से 1000 times faster. सबसे ज्यादा तेजी से हो रहा है extinction. 1000 times faster speed than the previous extinctions. Okay, and that is happening because of all these things which are from man. Okay, deforestation, hunting, over exploitation, habitat, ecosystem disruption, pollution and other things. Okay, this is the 6th mass extinction which is happening
एंड दैट वाज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन यूजुअली देख के ना लोग बाग छोड़ देते हैं, लीव कि क्यों 2-3 मिनट वेस्ट करे इसको पढ़ने में. पढ़ने के बाद पता चलता है ये सबसे ज्यादा आसान था एंड 100% गारंटी क्वेश्चन था. ओके ओके, दैट्स द थिंग. ओके, यूपीएससी 2012. Which one of the following is not an in situ, not a site for in situ method of conservation of species? So in situ conservation कौन सा नहीं है? So biosphere reserve, botanical garden, national park, wildlife sanctuaries. Who says A? B? C? D? क्या? B, हाँ. Confused. So what? अच्छा ठीक है. So what is in situ and ex situ? Inside the site. Okay. And ex situ? Yeah, outside. So when there is, if you want to conserve, if you allow the animal to be in natural habitat, उसको protected बना दिए and वहीं पे conservation करें, that is in situ. उस animal को उठा के आप दूसरों जगह पे लाके वहां पे conserve कर रहे हैं, that is ex situ. So biosphere reserve is in situ, in situ, in situ. Botanical gardens में क्या करते हैं? अलग अलग जगह पे plants लेके आते हैं और pot में artificially वो उनका natural habitat नहीं है, फिर भी हम लोग ग्लो करके प्रोटेक्ट करते हैं. UPSC prelims 2014 question. Okay, done. पढ़ लिए. The most important strategy for conservation of biodiversity, together with traditional human life, is establishment of. अगर biodiversity को traditional human life के साथ करना है, तो what is it? Biosphere reserve, botanical gardens, national parks, sanctuaries. Who says A? B? C? National parks. Okay, D? Why national parks? It's not affected and the tourism is also encouraged to that. नेशनल पार्क्स में बाकी कोई भी जगह है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देयर यू कैन इजीली रोम अराउंड. नेशनल पार्क्स में नॉट इवन एनी एनिमल यूज्ड एज व्हीकल इज अलाउड. ह्यूमंस को दूर दूर की बात है. Humans are not allowed without permission to enter the national parks. They are very, very highly secured. One of the most toughest place to sneak inside. एकदम तुरंत आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट लग जाएगा. Okay, one of the most secured place, huh? So yeah, it is not national parks. It is basically biosphere reserves. And these areas called biosphere reserves are announced under a program called as Man and Biosphere. Okay, MAB program बोलते हैं. So it is a program launched by UNESCO. Okay, so UNESCO program के अंदर हम लोग कुछ एरियाज को वहां का लोकल के साथ इट्स अ थिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ नेचर एंड द ह्यूमंस. जो लोकलाइट्स है उनको साथ मिला के कंजर्वेशन करते हैं.
So biodiversity conservation. What is biodiversity conservation? What is the meaning of this? Yeah. So biodiversity conservation basically is the protection, upliftment and enhancement of biodiversity to give the sustainable benefits for the people. Okay. So that is what is the thing. So when you say you are conserving biodiversity, अच्छा ये बताओ, what is the difference between conservation and preservation? It was a question to one of my student, interview question, UPSC interview question. So when I said biodiversity conservation, just remembered, but what is the difference between conservation and preservation? Okay. Basically, something is danger, and we are taking measures to like redo that thing. And preservation is that thing that hasn't been in that that danger zone, but can be. So we are taking preventive measures for it. Okay. Anything else? कंजर्विंग स्पीशीज so that जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड उसमें है उसे कंजर्व करना है प्रिवेंशन में अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है बट वी आर मेंटेनिंग दोस बाउंड्रीज की प्रिजर्व करना Just like in medical, there is preventive and curative. यस Okay. See, conservation is for living things and preservation is for non-living things. Okay. टाइगर को क्या करोगे? टाइगर को कंजर्व, अब मरने के बाद उसके बॉडी को है ना? सो दैट इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन. अगर कुछ याद नहीं है तो ये बता देना, तो यू विल बी सेफ. पर एक्चुअल मीनिंग जो है, बट देखो, अगर ये होने के बाद इफ ऐसे सॉइल का क्या करोगे? सॉइल इज प्रिजर्व. कहाँ? घर में लाके माइक्रोब को कंजर्व नहीं करते सॉइल. So some cases we use this interchangeably. इसीलिए the right explanation, scientific explanation क्या है? Conservation is where you not only maintain the present status but also try to enhance the status, improvise. उसको हम लोग conservation बोलते हैं. जो status है उसको maintain करके we'll try to improve the situation. Okay? Definitely not letting it to degrade, but improvise. प्रिजर्वेशन में क्या है? जो स्टेटस है उसी को मेंटेन करते हैं. नाइदर वी विल लेट देम डिग्रेड, नाइदर वी विल ट्राई टू इंप्रूव. प्रिजर्व, ओके, एज इट इज. या प्रिजर्व इट एज इट इज विदाउट डिग्रेडेशन, विदाउट इंप्रूवमेंट. ओके, वी विल नॉट इवन ट्राई टू एनहांस द थिंग. सो दैट्स द थिंग. So basically, biodiversity conservation, we are actually trying to protect and uplift the biodiversity, so in order to have a sustained management. And biodiversity conservation can be done in two ways. One is in situ and ex situ, inside the site or ex situ. In situ में क्या है? We have biodiversity hotspots, biosphere reserves, national parks, sanctuaries, reserved forest, protected forest, natural reserves and sacred groves. So all these are the areas where we protect the biodiversity in situ. Okay, ex situ, zoological park, zoo है ना? Zoo में हम लोग animals को पकड़ के आते हैं. Okay, from different countries, different places, and we keep them in enclosure and we give them food. Okay, ex situ preservation. Botanical gardens. Okay, wildlife safaris, सफारी पार्क्स, सीड बैंक्स, जर्मप्लाज्म बैंक्स. एक और ऐड करो इसमें, आर्बोरेटा. आर्बोरेटा क्या है?
heard of this? ऊटी गए कोई? आर्बोरेटा, हाँ? So don't worry, ऊटी is a honeymoon spot. अभी जरूरत नहीं जाने का. So arboreta is basically a collection of trees. जैसे botanical gardens है ना plants का, जैसे अगर tree को एक जगह पे दूसरी जगह पे उनका natural habitat नहीं है, वहां पे आके grow करेंगे. So that's called arboreta. Okay. So one of the biggest arboreta in India is in Ooty. Okay. So सीड बैंक्स जो है जितने भी हमारा इंडिया में प्लांट्स ग्रो करते हैं, ओके, आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली एज अ कमर्शियल क्रॉप और अ फॉरेस्ट क्रॉप. सो उन सब का सीड्स को ना इन द फॉर्म ऑफ सीड्स दे वुड हैव प्रिजर्व्ड देम. ओके, उसको सीड बैंक बोलते हैं. अगर कोई सीड का शॉर्टेज हो गया, नहीं मिला, तो दे विल गिव दिस सीड बैंक्स. ओके, सीड्स मतलब जो पेरेंटल सीड्स है, उसी सीड से हम लोग हाइब्रिड्स बना सकते हैं. okay, इसीलिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बेसिक मटेरियल रहना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस हाइब्रिड एवरी टाइम. ओके, वो सीड बैंक बोलते हैं जहां सीड को स्टोर करते हैं. जर्म प्लाज्म बैंक इज समथिंग डिफरेंट. इसमें हम लोग वी आर प्रिजर्विंग द प्लांट पार्ट्स. ओके, so we call it as explants, which may be seeds, it may be small piece of stem, small piece of roots या leaves या कुछ किसी भी पार्ट को छोटा सा पीस लेके उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं. इन -196 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के, so where all the biological activities will be arrested and it will come to a state of state of dormancy or rest. Okay, so when you want it, you will bring it out and we will do the tissue culture and we will mass multiply it. So germplasm is a place where all the plants are preserved in low temperature for further use. इसको हम लोग सीड बैंड्स को ज्यादा दिन नहीं रख सकते. सीड्स विल हैव सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स. वो उसके पहले हम उसको सो करके बड़ा करके देन वी हैव टू अगेन प्रोड्यूस द सीड्स एंड कीप इट अगेन. पर जर्म प्लाज्म प्लस में यू कैन कीप इट टिल 100 years, 200 years. So there is a institution called as National Bureau for Plant Genetic Resources. or NBPGR. Delhi में पूसा में. So they are doing the germplasm preservation of this thing. Sacred groves ऐसा virgin forests है, natural forests है, which are important because of the localates. वहाँ का जो tribes है या traditional dwellers है जो forest में अंदर रहते हैं, so वो लोग उस जंगल को भगवान मानते हैं. Okay, they treat it as their thing, they worship it. Okay, so they are very reluctant. So वहां पे क्या है, हम लोग इंटरफियर ही नहीं करते. गवर्नमेंट डजंट इवन गो एंड डू, दे आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज, किसी को अंदर जाने नहीं देते. सो दीज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स. ओके, सो lot of secret groves are there in Maharashtra, Karnataka, Arunachal Pradesh. So in Kannada it's called Devrakadu. Okay, so basically in Hindi it translates to Bhagwan ka jangal. Okay, so that is very sacred because of the locals. Locals treat that thing as their own. अगर किसी कोई गए तो they will finish you off. इसलिए वो restrict किया गया, and even the government doesn't involve in this. Okay, so that is the thing. So let's take a break. Okay,
we'll come back and we'll continue with the. It's been 2 hours, right? 2 hours हो गया. So call somebody, call them. So, for how long will you 20 minutes. क्या सोच रहे हैं? ब्रेक उसको बुलाना. हाँ. What is it? हाँ. और सही लंबा. हाँ, बरोबर.